Supernatural, what does it mean? Don't worry, I'm not asking you this question. I just want to let you know that the term supernatural and supernatural elements even को Shakespeare Julius Caesar Act 1 Scene 3 theme हिसाब से यूज कर सब विषय आम जे एपिसोड कथा दैट्स व्हाई आई एम हियर. Yes, this is Himanshu and welcome back to Utopian Concept Tutorials, a series of English language learning in ODIA and English. एबे जीवा supernatural शब्द अर्थ कौन? Anything जहाँ भी कही that is not according to the usual course of nature. जहाँ स्वाभाविक भाव घटेनि अस्वाभाविक किंतु supernatural एलिमेंट्स एठी जो शेक्सपियर यूज करछन सेटा होछि स्टॉर्म आउ क्रैशिंग थंडर एंड फ्लैशिंग लाइटनिंग आउ ए तीनोटी जो सुपरनेचुरल एलिमेंट से गोटे माने फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस अच्छी सेटा को आम ए सीन रे रियलाइज कर परिया सेटा को से कैस्का माध्यम एक्सप्रेस करछन केमिति मु से सब कथा कहया पूर्व कहया चाहे ये जो फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस कौन शेक्सपियर को दाबी जे एलिजाबेथन को पीरियड रे विशेषकर लोक मानकर गोटे दृढ़ धारणा मीन्स दे यूज टू थिंक व्हाट ना दे यूज टू थिंक ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड नेचुरल वर्ल्ड एज क्लोजली कनेक्टेड आउ जहाँफल से आउ गोटे विश्वास जे एनी डिस्टर्बांस दैट हैपेन्स इन द वर्ल्ड ऑफ नेचर हाँ से धारणा जे से सब घटना गुरा बिल्कुल से संसार माने घटो यही टाइप्र धारणा कैस्का माध्यम से एक्सप्रेस कर सीन 3 ओपन हो गोटे कन्वर्सेशन पैटर्न सिसेरो कैस्का कैसे से सब कैरेक्टर अच्छा सीन ओपन हो नेचुरल वर्ल्ड हाउ यू विल फाइंड दैट हाउ द नेचुरल वर्ल्ड रिफ्लेक्टिंग द अनरेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग राइट ये सब को लेकिन आम आज कथबार्ता हाँ ओके आरंभ करवा एबे ये हूँ सीन 3 रो सेटिंग विषय में कहूँ रोम रो राजरास्ता ओके आउ अपोजिट डायरेक्शन रू एडी फाइन फर्स्ट हूँ कैस्का और सिसर को नहीं अपोजिट डायरेक्शन रू कैस्कार एंट्री विथ हिज सोर्ड ड्रॉन एंड सिसेरो राइट किंतु डायलॉग टा बिगिन्स विथ कैरेक्टर सिसेरो. लेट मी रीड आउट. सिसेरो, गुड इवनिंग कैस्का. ब्रॉट यू सीजर होम. Why are you breathless? And why stare you so? What does it mean? प्रथम शिशर अभिवादन जन गुड इवनिंग कैस्का. Brought you Caesar home means did you accompany Caesar home? या did you bring Caesar home? And why are you breathless means माने तमें एमती अननिश्वास कहीं देखा जाउछ राइट. And why stare you so means why you are looking like this. ये जो लुकटा सेटा गोटे गोटे भयर चाहणी मन गोटे माने ता मुहर गोटे भय बहुत देखुची के शिशर दैट्स व्हाई आस्किंग. द कैस्का रिप्लाइड आर यू नॉट मूव्ड व्हेन ऑल द स्वे ऑफ अर्थ शेक्स लाइक ए थिंग अनफर्म. स्वे मीन्स क्रिएशन ऑफ अर्थ दैट अनफर्म हो अनस्टेडी. लेट मी क्लैरिफाई. आरंट यू फ्राइटेंड आरंट यू डिस्टर्ब्ड. शिशरो व्हेन ऑल द स्वे ऑफ अर्थ शेक्स मीन्स व्हेन द लॉ ऑफ नेचर सीम डिस्टर्ब्ड when the earth is trembling as if it seems that earth is going to collapse जमी भांगी पड़ो कि गोटे अघटन घटो यही टाइप्र ये सब को देखी यू आर नॉट फ्राइटेंड यू डोंट माने यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड. देन अगेन कहूँ ओ सिसेरो आई हैव सीन टेम्पेस्ट व्हेन द स्कोल्डिंग विंड्स मीन्स हार्श विंड्स हैव राइव्ड द नॉटी वर्क्स. राइव मीन्स टीयर अपार्ट राइट. टीयर अपार्ट टर्न अपार्ट. And I have seen the ambitious ocean swell and raise and foam to be exalted with the threatening clouds. Amane hochi o Cicero I have seen the tempest, the storm. Jetabale when a जो scolding winds means harsh winds has broken means has torn apart. काहाकू ना द नॉटी ओक्स जो विशाल जो ओक ट्री. नॉटी मीन्स एक्चुअली ओक ट्री रो ब्रांच हो ट्रंक हो यू विल फाइंड नॉट गंठी भाया देखा ये जो विशाल ओक ट्री जो नॉटी ओक ट्री को से दुई भाग विभक्त कर भांगी देची ये जो हार्श विंड राइट जो हेवी विंड. एंड इवन आई हैव सीन द एम्बिशियस ओशन व्हाट ना स्वेलिंग रेजिंग एंड फोमिंग. एम्बिशियस ओशन जो पानी जो समुद्र जलराशि जो फुले माने स्वेल करे आउ रेजिंग मीन्स माने मेकिंग साउंड रोरिंग साउंड गोटे गर्जन तर्जन गोटे आवाज हुए आउ फोमिंग मीन्स यही लहड़ी रे फेण आसे. यही जो एम्बिशियस ओशन स्वेलिंग रेजिंग एंड फोमिंग यहाँ मन हो एज इफ दे आर माने द ओशन इज ट्राइंग इट्स बेस्ट जस्ट टू राइज राइट अप टू थ्रेटनिंग क्लाउड्स. ये क्लाउड्स जो आकाश रे जो बादल बा जो मेघ अच्छी से पूरा घन अंधार तो आकाशटा हूँ कौन थ्रेटनिंग टाइप गोटे भयावह दृश्य भाया माने गोटे सिचुएसन क्रिएट कर शेक्सपियर थ्रेटनिंग क्लाउड्स कहते. से थ्रेटनिंग क्लाउड्स को जमी से सते जमी छुईब राइट.
यही धरण भाव से कौन जलराशि फुलिकी जो रेजिंग माने फोम क्रिएट करके आसू जमी सत जमी आकाश को से छुई पकेब बट नेवर टिल टू नाइट नेवर टिल नाउ नेवर बिफोर नेवर टिल नाउ आज सुधा भी एवं सुधा भी डिड आई गो थ्रू ए टेम्पेस्ट ड्रॉपिंग फायर have I seen this type of tempest, especially this type of storm, especially that drops fire, that rains fire, or that drops thunderbolts. अग्नि वर्षा एमती कर टाइप झड़ मुझे देखनी जे कि झड़ तो नुहे जमी अग्नि वर्षा हो टाइप एमती मुझे भी देखनी तापर से कौन कह जान मोर कि कौन मन हुए शेष कैसका कौन शेष को आइदर देयर इज अ सिविल स्ट्राइफ मीन्स सिविल वॉर either there is a civil strife in heaven or else the world too saucy with gods. Saucy means ill behaved actually, the activity of human being behavior. God incensed them to send destruction. कैसका कुछ शिशर मोर कौन मन हुई जान ये जो सिविल स्ट्राइफ कथा ग्रोज विथ मोस्ट प्रोबेबली ये सिविल वॉर इज गोइंग ऑन इन हेवन नचेत द वर्ल्ड मीन्स द ह्यूमन बीइंग you know has become really very disrespectful and very arrogant towards whom the gods भगवान प्रति एमती गोटे असम्मान से प्रदर्शन करते आते अहंकार हो पड़ते विशेषकर भगवान प्रति से जो यही टाइप एक्टिविटी दिस एक्टिविटी मस्ट हैव एंगर्ड देम राइट दैट्स व्हाई दे आर सेंडिंग डाउन दिस डिस्ट्रक्शन आवर वे से संसार को ध्वंस पृथ्वी ध्वंस करने इच्छा कर राइट तापर ये सब कथा शुणी शेष पचार व्हाई कौन पाई सॉ यू एनीथिंग मोर वंडरफुल डिड यू सी एनीथिंग मोर वंडरफुल वंडरफुल मीन्स अनयूजुअल इवेंट्स आउ किसी सेमती किसी देख लो कि राइट एवं कैस्का केमती रिप्लाई देला कैस्का सेट ए कॉमन स्लेव यू नो हिम वेल बाय साइट हेल्ड ऑफ हिज लेफ्ट हैंड व्हिच डिड फ्लेम एंड बर्न लाइक 20 टॉर्चेस जॉइंट एंड एट हिज हैंड नॉट सेंसिबल ऑफ फायर remain unscratched. कैसे कौच ए कॉमन स्लेव एमती गोटे साधारण भाव जो स्लेव चाकर गोटे यू नो हिम वेल बाय साइट इफ यू सी हिम देन यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज हिम ओके दैट कॉमन स्लेव हेल्डिंग अप हिज लेफ्ट हैंड and that left hand was on fire did flame and burn was on fire like 20 torches joint hello ये torches means मसाल एकाठी 20टा मसाल को एकाठी करदले जेमती जळे सेई टाइप रो ता बाहातटा कोन होचे ता जळुथला and yet his hand not sensible of fire still his hand is not feeling of fire means his hand seemed to be ये fireproof right and remained unscorched means remained unburnt right means it did not burn next scenes कथा से कहूँ besides I have not since put up my sword means since then I have not put my sword back into the sheath एटी sheath होची एमती sharp weapons मान को रखिया पाई जेमती खोल थाए खंडा से टाइप से खोल भितर मु पसेनी against the capital is the place against the capital means when कास्का कहूँ when I was heading towards the capital I met a lion who gazed upon me and went surely by without annoying me. I encountered a lion. I saw a lion. That lion looked at me, glared at me, and went surely by without annoying me, but went away simply. Looked at me, glared at me, but walked away without harming me, without injuring me. मतलब किसी आघात देनी. And next, there were drawn upon a heap of 100 ghastly women, transformed with their fear, who showed they saw men all in fire walk up and down the streets. Next incident katha kochi, there were 100 of women. Actually, they are terrified. They are looking terrified, and they are looking like paralyzed with fear. Actually, जेमती भୟରେ माने पैरालाइज्ड हो जिबा शरीर अंग प्रत्यंग किछ काम न करिवनी सेही टाइप रो अवस्था से मन थिले और से माने कोन क्लेम करथले जान दाबी करथले दे वर क्लेमिंग टू हैव सीन मेन all in fire all are covered in fire
and they were walking up and down the streets, means walking on the streets. रास्ता से चल चल जाऊे ये गोटे अनयूजुअल इवेंट. नेक्स्ट कौच एंड यस्टरडे द वर्ड ऑफ नाइट मीन्स आउल पेचा डिड सैट इवेन एट नून डे अपन. साधारणतः पेचा माने राति ही देखा जाती, राति से माने आवास जो शब्द जो क्रिएट करते राति ही करती, माने रात्रिचर प्राणी नक्शनल एनिमल. से दृश्य हूँ कौन से कहे मुझे दिन बेला देखी नून डे राइट खरा बेलटा देखी आउ सी कौन दैट नक्शनल एनिमल जोटा जो वर्ड ऑफ नाइट सैट इन द मार्केट प्लेस एंड क्रिएटिंग ए साउंड बा हुटिंग जोटा हूँ हॉलिंग साउंड श्रिकिंग राइट हुटिंग साउंड यही टाइप शब्द कौन कर सृष्टि कर. एंड व्हेन दिस प्रोड्यूसेस डू सो कंजॉइंटली मीट लेट नॉट मेन से दिस आर देयर रीजन्स and they are natural. Okay, जितेबाला दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट सपोज यू पुट टुगेदर यहाँ को जो एकाठी कर दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट हैपेंड एट द सेम टाइम जदि गोटे समय घटे डू यू थिंक एनीवन विल से दैट दिस आर नेचुरल अकरेंस. यहाँ गोटे स्वाभाविक भाव यहाँ घटे बोली कहीं दाबी करेंगे कहीं भी कहबेनि. एंड ये कारण फॉर आई बिलीव दे आर पोटेंटियस थिंग्स mean actually unnatural event unto the climate refers to the earth means to Rome unto the climate that they point upon means this type of incident pointing indicating something unusual, that is something you know that kind of disorder or disturbance is going to happen in Rome right. Rome रे किछि गोटे अघटन घटिबो एई सब जिंस माने भाबी तार गोटे कैस्कारा होछि गोटे अनुमान राइट. कैस्का जो अनयूजुअल इवेंट्स को नैरेट कला से शुणी सारा केमिति सिसेरो रिएक्ट करछि लेट मी रीड आउट. सिसेरो इंडीड इट इज अ स्ट्रेंज डिस्पोज टाइम बट मेन मेक कंस्ट्रू मीन्स इंटरप्रिट थिंग्स आफ्टर देयर फैशन क्लीन फ्रॉम द पर्पस ऑफ द थिंग्स देमसेल्फ राइट. से कौच एक्चुअली सिसेरो इज नॉट वेरी क्लियर क्या विषय वेदर और नॉट द स्टॉर्म ये जो स्टॉर्म जो झड़ बा जो अनयूजुअल इवेंट्स को से नैरेट कला दे आर मोर देन बैड वेदर और नॉट ये कथा सी एक्चुअली कौन सिसोर इज नॉट कमिटेड ओवर दिस इश्यू तो सी थॉटफुली नॉटेड येस इट इज अ स्ट्रेंज अनयूजुअल टाइम एक्चुअली वी आर लिविंग इन आम जो समय में रोचे एक बहुत एक्चुअली समयटा बहुत अनयूजुअल व स्ट्रेंज एंड नॉर्मली से कहे मेन में कंस्ट्रू मीन्स very often people may construe means may interpret people of very often interpret what they want. People never try to understand the real meaning of what is happening or what is going to happen around them. ताका आखपाखे जहाँ भी किसी घटुची तार रियलिटी विषय से चेक करने को इंटरेस्टेड नुहति. Simply most often very often they interpret the things what they want in their own fashion right. कम तापर कौन कर जस्ट ऐसी कथा को कही सारा हैविंग सेड दिस से कौन कर चैप्टर को क्लोज करी बिफोर लिविंग दिस प्लेस से पचारि पकाउछि कौन से कैस्का को जे कैस्का कम सीजर टू द कैपिटल टुमारो इज सीजर कमिंग टू द कैपिटल टुमारो. कैस्का रिप्लाइड ही डथ ही इज फॉर ही डिड बिड एंटोनियस सेंड वर्ड टू यू ही वुड बी देयर टुमारो. ए कैस्का एक कथा शुणी जे सीजर कह माने एंटोनियस को कहद्वारा जे ही टोल्ड एंटोनियस टू टेल यू व्हाट दैट ही वुड बी देयर मीन्स ही वुड बी इन द कैपिटल टुमारो मीन्स सीजर विल कम टू कैपिटल टुमारो. सीजरो देन ये कथा शुणी सारी कहूँ गुड नाइट देन कैस्का गुड नाइट कैस्का बट दिस डिस्टर्ब स्काई इज नॉट टू वॉक इन. किंतु जो डिस्टर्ब स्काई मीन्स डिस्टर्ब वेदर ये जो क्लाइमेट ये जो वेदरटा अच्छी पागटा एक्चुअली इज नॉट गुड टू स्टे आउटसाइड टू वॉक इन राइट. कैस्का भी फेयरवेल सिसेरो ये समय एक्जिट कर सिसेरो और एंटर हो कैसियस कह हु इज देयर. कैस्का रिप्लाइड ए रोमन. देन कैसियस सेड कैस्का बाय योर वॉइस कैस्का आई रिकग्नाइज योर वॉइस that you are Casca. Casca replied, your ear is good. Means you have got a good ear. Means you have got a good sense of hearing. Cassius. तापर phone Casca कहूँ what night is this? What a strange night this is. The Cassius instantly responded
to this query, and what is said, let me read out. Cassius said, a very pleasing night to honest man. এই স্টেটমেন্টটা ক্যাସିୟସ୍ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ରାତିଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ନାଇଟ୍ କାହା ପାଇଁ ନା, ବିଶେଷ କରି ଅନେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷ ବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ମଣିଷ, ଅନେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ସିମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଲୋଡେଡ୍ ୱିଥ୍ ଭେରି ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ମିନିଂ। ସେଇଟା କ'ଣ, ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ କ୍ୟାସିୟସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଭେରି ସ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲାନର, ଆଉ ସେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହି ପଜେସ୍ very strong and keen insight, गोटे अंतर्दृष्टि जहाँ फल he can easily judge human nature. Now एठी Cassius is very clearly well aware of Casca's superstitious nature. Now जहाँ फल as a result he has started to take advantage of this type of nature of Casca. Okay, and then he started to use his own technique for what? Now, to persuade Casca to join him. ତାଙ୍କର ଜଏନ୍ ହିମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ୱିଲ୍ କିଲ୍ ସିଜର, ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ରାଇଟ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମିନିଂ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ପାୱାରଫୁଲ୍ ମିନିଂ କଥା କହିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେଇଟା କ'ଣ, କ୍ୟାସିୟସ୍ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଅନେଷ୍ଟ, ରାଇଟ୍, ଦେ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ଲିଜ୍ଡ, ବିକଜ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ଲିଜ୍ଡ that the gods are hinting at what na, hinting at unnatural political states ba unnatural जो disorder jota that exist in Rome, right? Now that's why gods are expressing their anger through this storm, the violent storm. So that's why it's pleasant night for the honest man. Then Casca replied, whoever knew the heavens menace so, actually who would have thought, कि भाविछि जे the heavens could be so threatening? Cassius instantly replied, what? The Cassius said, those that have known the earth so full of faults, the earth so full of faults means earth full of flaws and problems. Amane eta, तो instantly Cassius replied कहुछि, हाँ, those who know the earth to be full of flaws and problems, they know, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି why the heaven has become so threatening, right? Then said, continued, on my part, I have walked about the streets submitting me unto the perilous night. Perilous means dangerous night, right? On my part, I have been walking around the streets. How? Now exposing myself to this type of dangerous night, and then thus embraced means unfastened. लूजनिंग जो जैकेटा पिंची ताकू लिखाई है अनब्रेस्ट मीन्स विथ डबलेट अनफेस्टेन, डबलेट मीन्स रेफर्स टू द जैकेट, अनफेस्टनिंग द जैकेट, and as you see Casca have bared my bosom to the thunderstone, exposing my chest to the thunderbolt, right? Thunderstone, thunderbolt. And when the cross blue lightning seemed to open the breast of heaven, मैंने तापर पुणी कहूँ when एटी जो क्रॉस कथा कही जो क्रॉस ब्लू लाइटनिंग, ये जो क्रॉस द वर्डर मीनिंग हो जिगजैग लिखा जाए माने नॉर्मली जितेबाला द लाइटनिंग फ्लासेस इन द स्काय सेटा कौन करे, दैट फ्लासेस इन नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, राइट, इन ए जिगजैग लाइन, दैट्स वाई एटी क्रॉस को यूज करा जाए जो द क्रॉस ब्लू लाइटनिंग। तो व्हेन दिस क्रॉस ब्लू लाइटनिंग सीम टू ओपन द हार्ट ऑफ हेवन, जो आकाशर स्वर्गर हृदय चिरी जितेबाला से प्रतिफलित हुए आकाश रे ये जो फ्लाशिंग लाइटनिंग, से मुझे कौन करे जान, आई डिड माई सेल्फ इवन इन द एम एंड वेरी फ्लाश ऑफ इट, आई स्टूड, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लाश ऑफ द लाइटनिंग। एक कथा को शुणी बहुत सरप्राइज हो जाए, तो कैस्का इज सरप्राइज्ड, पचारुची कहूँ, बट wherefore did you so much tempt the heavens? Why did you tempt the heavens to hit you, Cassius? It is part of men to fear and tremble. It's very natural for the people to be afraid when normally they face this type of danger, and it's also very natural for them also to tremble just at this type of such dreadful events. So why did you tempt the sky to hit you?
ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛି when the most mighty gods, କାରଣ ଭଗବାନ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍, mighty gods by token send such dreadful heralds to astonish us। ସେ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇଟି ଗଡ୍ସ ଦେ ଆର୍ ସେଣ୍ଡିଂ ଡାଉନ୍ ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଦ ଡ୍ରେଡଫୁଲ୍ ହେରାଲ୍ଡସ୍ ଡ୍ରେଡଫୁଲ୍ ଯେଉଁ destruction our way just to astonish us means just to terrify us right, ଏଟାକୁ ଆମକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ନର୍ମାଲ୍।